Come on, we'll start the problems on cost of capital. Hope everybody has got this hard copy of the problems of cost of capital. You have taken a hard copy from the attachments because this is compulsory. When I explain the problem, you must have on hand the hard copy. Now, M Limited issues 10% irredeemable preference shares. So first problem is on KP. The nominal value of which is 100 rupees. You are required to calculate the cost of preference share capital KP in each of the following cases. When issued at 5% discount and when issued at 5% premium. So we have to calculate the cost of preference capital. So this is the first problem. Cost of preference capital. It is called KP. It is called KP. So KP, the formula is dP by NP into 100, where dP is equal to preference dividend. That is equal to, in the problem it is given, the preference dividend is 10%. 10% of what is the face value? 100 rupees. 100 rupees is the face value. 10% is the dividend. So that will be 10 rupees. NP is equal to net proceeds on issue. Net proceeds on issue. Now we'll take case 1. In case 1, issued at 5% discount. Issued at 5% discount. तो कंपनी जब इश्यू कर रही प्रेफरेंस शेयर 5% डिस्काउंट के ऊपर इश्यू कर रही है, 5% लेस, तो फेस नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस 5% डिस्काउंट. फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज है, माइनस 5% निकाल दिया तो 95 हो, तो नेट प्रोसीड्स वी गॉट 95. नाउ केपी इज इक्वल टू डीपी बाय एनपी into 100. So dividend, how much we have already calculated? 10 rupees. And net proceeds 95 into 100. So 10 divided by 95 into 100, 10.53. Or we got cost of preference capital 10.53. Now case 2. Case 2. Issued at 5% premium. जो शेयर इश्यू कर रहे हैं 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, वो 100 रुपीज के फेस वैल्यू पर 5% एक्स्ट्रा, तो नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस 5% प्रीमियम. फेस वैल्यू इज गिवन एज 100 plus 5% means it will become 105. KP is equal to DP by NP into 100. So dividend is 10 rupees. NP is 105 into 100. So KP is equal to, you will get 9.52%. That's all. This is the first problem on specific cost of capital. The specific cost of capital is KP. Now second problem. A company issues 1010% preference shares of 100 each at a discount of 5%. Cost of raising capital. ये cost of raising capital को कहते हैं flotation cost. तो flotation cost 2000. Compute the cost of preference capital. The company issues 1000 shares of rupees 100 each. 1000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, एक शेयर 100 रुपये का है, तो 1000 into 100 will be 1 lakh. तो फेस वैल्यू ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर इज 1 lakh. Second problem. Calculation of KP, cost of preference capital. KP is equal to DP by NP into 100. DP is equal to preference dividend. DP stands for preference. The rate of preference dividend is 10% of
rupees 1 lakh, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each, तो 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000. नाउ नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस 5% डिस्काउंट minus rupees 2000 flotation cost. Face value is 1 lakh. Minus 5% means 5,000. Minus 2,000 is equal to 93,000. So net proceeds we got 93,000. KP is equal to DP by NP into 100. 10,000 divided by 93,000 into 100. So 10,000 by 93,000 into 100, 10.75%. That's it. So what is the new point in this problem? Flotation cost. तो फ्लोटेशन कॉस्ट और डिस्काउंट दोनों को भी माइनस करें तो नेट प्रोसीड्स आएगा. 1 लाख रुपए के कंपनी प्रेफरेंशियल इश्यू कर रही, इश्यू करते वक्त 5,000 रुपए डिस्काउंट पे 100 रुपए का डिबेंचर 95 रुपीज में इश्यू कर रही, तो 5,000 रुपए लॉस हो गया, माइनस कर देंगे. और फिर ये रेस करने के लिए 1 लाख रुपए रेस करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट 2,000 रुपए, वो भी माइनस कर दो, तो 93,000 रुपीज आ रहे. तो आ रहा अमाउंट 93,000 और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना जा रहा 10,000, तो परसेंटेज टर्म्स इट कम्स टू 10.75%. This is the preference dividend. Now, problem number 3. A company raised preference share capital of rupees 1 lakh by issuing 10% preference share of 100 each. तो 1 लाख रुपए के preference share capital, उसके ऊपर 10% preference dividend. Calculate the cost of preference share capital when they are issued at par value, 10% premium and 10% discount. तीनों केसेस में KP कितना है मालूम करें. तो थर्ड प्रॉब्लम, calculation of cost of preference. KP is equal to DP by NP into 100. DP is equal to preference dividend कितना परसेंटेज है, 10% of rupees 1 lakh. 10,000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड है. अब ईच केस विल टेक ए इश्यूड एट पार. पार का मतलब होता है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू और पार वैल्यू दोनों का मतलब एक ही है, तो नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1 लाख. नाउ केपी इज इक्वल टू डीपी कितना है 10,000, एनपी कितना है 1 लाख into 100 is equal to 10%. First case completed. Now B, issued at 10% premium. Net proceeds is equal to face value plus 10% premium. 1 lakh plus 10%, 1 lakh 10,000. KP is equal to 10,000 divided by 1 lakh 10,000 into 100. 10,000 by 1, 9.09. Similarly C, issued at 10% discount. So net proceeds is equal to face value minus 10% discount. $10,000 divided by 90,000 into 100. 10,000 by 90,000 into 100, 11.11%. That's all. So these 3 problems we have done on KP, cost of preference. Now we'll come to the 4th problem.
फोर्थ वन, एक्स लिमिटेड इश्यूज 5008% डिबेंचर्स, के डी आ गया। अभी तक तीन प्रॉब्लम के पी था, अब जो है के डी। एक्स लिमिटेड इश्यूज 5008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। एक डिबेंचर 100 रुपये का है, लेकिन 5000 डिबेंचर इश्यू करे तो 5000 इंटू 100 5 लाख, 5 लाख रुपए का फेस वैल्यू है। उसको 10% प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं और 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट है। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ 2%, द टैक्स रेट अप्लीकेबल टू द कंपनी इज 60%। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग कॉस्ट ऑफ डेट। Calculation of cost of debt, KD. The formula is KD after tax is equal to I divided by NP into 1 minus T into 100. This is the formula for calculating KD. I stands for interest on debentures. Always the interest will be calculated on the face value. तो rate of interest 8% है। डिबेंचर्स है कितने के? 5 लाख रुपए के। 5 लाख रुपीस का डिबेंचर, देखिए 5000 डिबेंचर से एक डिबेंचर 100 रुपीस का है, तो 5000 इंटू 100 5 लाख, 40,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट इज 40,000। एनपी, net proceeds on issue, face value plus 10% premium minus 2% flotation cost. Face value 5 lakh प्लस 10% का मतलब 50,000 माइनस 2% ऑफ 5,50,000। 2% means 11,000। 5 lakh minus, this is not plus, minus, तो 50,000 minus 11,000 39,000, 30 40 50 39,000। This is the net proceeds on issue. T is equal to tax rate. The tax rate is given in the problem as 60%. 0.6. Now, KD after tax, I divided by NP into 1 minus T into 100. Interest 40,000. Divided by 5,39,000, 1 minus 0.6 into 100. 40,000 divided by 5,39,000 into 0.4 into 100. So KD 40,000 divided by 5,39,000 into 1, 2.97%. That's it. Check 40,000 divided by 5,39,000 into 0.4 into 100, 2.97%. So first time we have done the problem on KD, cost of debt, debentures. Irredeemable है। Period of redemption दिया है क्या प्रॉब्लम में? नहीं दिया। 5 year, 10 year, 20 year कुछ भी नहीं दिया। टाइम पीरियड नहीं दिया, तो इसका मतलब इररिडीमेबल। इररिडीमेबल के लिए शॉर्ट फॉर्मूला I डिवाइड बाय NP इंटू 1 माइनस T इंटू 100। अब आने वाले एवरी प्रॉब्लम में सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला। इंटरेस्ट 8% ऑफ 5,40,000। नेट प्रोसीड्स ऑन इश्यू, जब डिबेंचर इश्यू करें तो पैसा आया कितना? तो पहले 5 लाख रुपए का डिबेंचर 10% प्रीमियम, तो 5 लाख का 10% 50,000 बढ़ा देंगे, 5 लाख प्लस 50,000, और उसके ऊपर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। 2% of 5,50,000, 11,000. So 550 minus 7, 5,39,000 is the net proceeds on issue. Tax rate problem में दे दिया 60%, 0.6.
substitute कर दो. Fifth problem. Problem number 5. A bond with a coupon rate of 12% and par value 1000. Bond is also just like debenture. It's a debt instrument. A bond with a coupon rate of 12% and par value 1000 has a flotation cost of 5000. What is the post-tax KD? Post-tax का मतलब after tax. At a tax rate of 40%. Calculation of cost of debt, KD. Interest, 12% of 1000, 120. NP, net proceeds on issue, face value minus 5% flotation cost. Face value is 1000 minus 5%, 50, so 950. T is equal to tax rate. Tax rate is 40%. I, interest is 120 divided by 950 into 1 minus 0.4. $120 by 950 into 0.6 into 7.58%. %7.58%. Correct, 7.58%. Now we'll come to the next problem, sixth one. A company has 10% perpetual debt. Perpetual का मतलब irredeemable, जो कंटिन्यू होने वाला है, ब्रेक खत्म होने वाला है. परपेचुअल का मतलब कंटिन्यूअस, तो irredeemable. A company has 10% perpetual debt of rupees 1 lakh. The tax rate is 50%. Determine the cost of debt before as well as after tax. याद रखिए, ये 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई करने से आफ्टर टैक्स आता है. 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करें तो आफ्टर टैक्स. अगर ये 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बिफोर टैक्स. Without multiplying with 1 minus t, will get before tax. ये प्रॉब्लम है before as well as after tax बोल रहा. If the debt is issued at par, 10% premium and 10% discount. KD before tax, I divided by NP into 100. I divided by NP into 1 minus T into 100. तो बिफोर टैक्स मालूम करना है तो मल्टीप्लाई इंटू 1 बाई टी नहीं करना, 1 माइनस टी नहीं करना, यहाँ पर 1 माइनस टी करना. और ऑल्टरनेटिवली KD आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू KD जो भी KD बिफोर टैक्स आएगा वो KD बिफोर टैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी, राइट. तो फर्स्ट केस I is equal to what is the rate of interest? To see the problem, 10% of 1 lakh. %10 of 1 lakh is 10,000. Then T is equal to 0.5. Case A, issued at par.
Net proceeds is equal to face value. Face value 1 lakh. The face value is 1 lakh. Now KD before tax. I कितना है 10,000. NP 1 lakh. %. KD after tax. जो भी KD बिफोर टैक्स आया 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.5. 5%. तो 10% बिफोर टैक्स है और आफ्टर टैक्स 5%. तो जो भी बिफोर टैक्स आएगा उसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे. नाउ विल टेक केस बी. Issued at 10% discount. Net proceeds is equal to face value minus 10% discount. Face value 1 lakh. KD before tax. So I divided by NP into 100. So 10,000 divided by 90,000 into 100. So 10,000 divided by 90,000 into 100, 11.11. KD after tax. 11.11 into 1 minus tax rate is 50% is equal to 5.56. Over. Now case C. Issued at 10% premium. One lakh 10,000. $10,000 divided by 1,10,000 into 100. 9.09. KD after tax. 9.09 into 1 minus 0.5. 4.55. That's all. So what is the new point in this problem? Before tax and after tax. तो पहले KD before tax मालूम कर लिए, फिर उसके बाद KD after tax. Before tax कैलकुलेट करते हो 1 minus t मल्टीप्लाई नहीं करना, और जो भी बिफोर टैक्स आ गया उसको बाद में 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर लो, आफ्टर टैक्स आ जाएगा. सेवेंथ प्रॉब्लम आई एम गिविंग यू फॉर योर प्रैक्टिस होमवर्क, बिकॉज सिक्स्थ एंड सेवेंथ प्रॉब्लम्स आर एग्जैक्टली सेम. अभी जो किए प्रॉब्लम आप, सिक्स्थ प्रॉब्लम ABC सेम सेवेंथ प्रॉब्लम है. ए कंपनी इश्यूज 10% इर्रीडीमेबल डिबेंचर्स, परपेचुअल कहो या इर्रीडीमेबल कहो एक ही मतलब, ऑफ ₹1 लाख. तो 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू है और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, तो 10,000 हो जाएगा. द कंपनी इज इन 55% टैक्स ब्रैकेट. तो टी के प्लेस पर जब 0.5 लिए थे, ये टी के प्लेस पे 0.5 लिए थे, अब टी के प्लेस पे 0.55 लेंगे. टी इज इक्वल टू 0.55.
Calculate the cost of debt before as well as after tax if the debentures are issued at par value, 10% premium, 10% discount. पूरा सिक्स्थ प्रॉब्लम सेवेंथ प्रॉब्लम एक ही है, खाली डिफरेंस ये 50% डिविडेंड पहले था, अब 55%, 55% डिविडेंड टैक्स रेट. So you can do the seventh problem as your homework. Eighth problem. Problem number 8. A company issues 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each. 5,000 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख, 5 लाख रुपए का डिबेंचर है और उसके ऊपर इंटरेस्ट 12%. तो 12% ऑफ 5 लाख 60,000 रुपीज इज द इंटरेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. इश्यू करते हो 5% डिस्काउंट, तो माइनस कर देंगे वो 5 लाख रुपये फेस वैल्यू में से 5% डिस्काउंट. द कमीशन पेएबल टू अंडरराइटर्स एंड ब्रोकर्स 25,000. ये फ्लोटेशन कॉस्ट, इसको भी माइनस कर. तो नेट प्रोसीड्स एनपी मालूम करते वक्त फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years. ये नया पॉइंट, रिडीमेबल, तो फिर फॉर्मूला अलग हो जाएगा, के डी का फॉर्मूला अलग हो जाएगा. देन कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ 50%. Redeemable debentures. KD after tax is equal to I plus P minus NP by N divided by P plus NP divided by 2 into 1 minus T into 100. ये फॉर्मूला, फर्स्ट टाइम वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर रिडीमेबल डिबेंचर्स. पहले जो था ये इररिडीमेबल था, परपेचुअल था, अब रिडीमेबल है. I इज इक्वल टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या रेट से देखिए, 12% ऑफ 5 लाख, 60,000. P इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन. ये याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस. एक एक सिंबल का मीनिंग क्या होता है वो याद रखना. P जो अल्फाबेट है, P का मतलब अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन. अब ये पीरियड कितना दिया, 5 साल, 5 years है,